Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Chadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths. And our chapter is square and square root and cube root. Okay. Yesterday we have revised this chapter. Okay, and we learned what is square number, what is square root, what is cube number, what is cube root. Okay. Now let's quick revise that and then see what type of question is come. Okay, so the square of a number is the number multiplied by itself. Okay, the square of a number which have multiplied by itself. The number is called the base, and and as it multiply by itself only once, its power is 2. Okay, so in power or index is 2. Okay, the square of even number is even and square of odd number is odd. Okay, the square of a proper fraction is less than the proper fraction. Okay, remember this thing, the square of proper fraction is less than the proper fraction. Okay, and the square of improper fraction is greater than the improper fraction. Okay, understand, given a number be it positive or negative, its square is always positive. Okay, understand. And what do you mean by perfect square? Number which can be expressed as the square of two exact rational number are known as perfect square number. Okay, understand. So, and what do you mean by square root of any number? When a number a multiplied by itself give a certain product a square, a is known as a square root of a square. Okay, a is known as of a square root of a square. The square root of root is all the example given below, means we can write square root of a square, we can write a into a, एंड स्क्वायर रूट के बाहर निकाल कर हम क्या लिख सकते हैं? ओनली ए. ओके, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन. Okay, this sign is called radical sign and denoted square root. Okay, understand. So now we see following is which steps you have to follow to finding a square root. Obtain the prime factorization of given number, make pair of identical factors, and find the product of one factor taken from each pair. Obtain any step. Okay, understand, this will give in the square root. Okay, understand. So this way you can easily find the square root of any number. Okay, student. Now we can see in this chapter finding square root by different method. First is factorization, prime factorization, then we can see division method. Okay, and then we see the estimation method. Okay, so we can estimate any number and see how to find square root of any number. Okay, now what do you mean by cube? We learn when a number multiply by itself 3 times. Okay, so we can say that it's a cube of any number. When a number multiply by its square give a certain product a cube, the number a is known as the cube root of a. Okay, means a cube means a into a into a. This is known as cube of any number. And what do you mean by cube root? Cube root of a cube is a. Okay, understand. And this is the sign of cube root. Okay, understand. What is the sign of cube root? This is the sign of cube root. Okay, this is the sign of square root and this is the sign of cube root. Okay, understand. Now let's see. So students, let's see which type of question is come in to your exam. Yesterday we completed all the solved examples. Okay, 1 to 7.
we have completed 1 to 5th. Okay, now see the value of root 176 plus root 2401 is. Okay, so whenever you find this type of value, what do you mean by root? So first of all you have to find prime factorization of 2401 and 176. Okay, understand? So 2401 रूट के अंदर रूट है. ओके, दिस इज द रूट अंडर अ रूट. ओके, सो लेट्स फाइंड. फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे 2401 बिकॉज वंस प्लेस पर 1 है. ओके, सो वी कैन सी इफ वंस प्लेस हैविंग 1, सो इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2. ओके, कोई भी प्राइम नंबर से कोई भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ओके, नाउ अगर ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करके देखेंगे. 3 व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? व्हेन वी ऐड ऑल द नंबर्स, इफ़ the sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Okay, 2 plus 4, that is 6. 6 plus 1 is 7. So it is not divisible by 3 also. 5 से भी divisible नहीं होगा. Now let's see क्या ये 7 से divisible होगा. So 7 3s are 21. कितना बचा बेटा यहाँ पर? We have remainder 3. Okay, so 7 3s are 21, 7 4s are 28. Okay, now 2 is as a reminder, so 7 3s are 21. Okay, now again 7 4s are 28 and 7 9s are 63. Okay, understand? Now 49 को आपको पता है 7 से जाता है 7 टाइम्स में. ओके, so you can easily write it. हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2401 को हम लिख सकते हैं रूट 176 प्लस रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. हाउ मेनी पेयर यू गेट? 2 पेयर ऑफ 7. सो आप क्या निकाल सकते हैं? हर एक पेयर से एक 7 बाहर निकाल सकते हैं. ओके, so we can get 7 into 7, that is 49. Okay, so your answer is 176 plus 49 and you get root 225, and 225 is the square root of 50. Okay, understand? So this way you solve this type of question. Now see, given that 5625 is equal to 75, the value of root 0.5625 is plus root 56.25 is. So we know that if 5625 is 75, so 0.5625 is 0.75 and 56.25 is 77.5. Okay, understand? So you have to add these two numbers and then get the answer. Okay, understand? Now let's see. 68 square we will have dash at the unit place. So here if 8 is in the unit place, अगर 8 unit place पर है तो हम क्या करेंगे बच्चों? 8 का स्क्वायर क्या होता है? We know that square of 8 is 8 8s are 64. So 4 होता है, तो our answer is 4. Okay, so the positive square root of a number x is denoted by, पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, रूट एक्स. द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई विथ 9 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3. द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई विथ 9 टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब. 9 को परफेक्ट क्यूब बनाना है. सो 9 के बाद में सी हमारा सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 1. 1 के बाद में क्या आता है? 8. ओके, बिकॉज 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27. सो 9 27 कब बनेगा? जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड?
सो दिस वे थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सी द ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो. ओके, ये आपको आइडिया देगा बिकॉज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप्स के हैं ओनली. सो ओनली सी द क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स. ओके, now see next question. Check whether 90 is a perfect square or not. Check whether 90 is a perfect square number or not by using prime factorization. So what can you do? You have to doing simply prime factorization. Okay, prime factorization is always doing with prime numbers. Okay, and you know what is prime number? 2, 3, 5, 7 means जिसे हम और ब्रेक नहीं कर सकते. ओके, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड 2. 3 के फैक्टर 1 एंड 3. 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5. ओके, सो दे आर प्राइम नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड. सो यू कैन सिंपली prime factorize the number. Check whether 1728 is a perfect cube by using prime factorization. So what can we do? We have to complete prime factorization and then we can write it is perfect cube or not. Okay, understand. See example number 23. Using distributive law, find the square of 43. So what is distributive law? We know. सो व्हाट वी कैन डू, 43 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 + 3. ओके, सो 40 + 3 लिख करके हमने क्या किया उसे 43 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 3 होल स्क्वायर. सो 40 + 3 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 40 + 3 इंटू 40 + 3. ओके, एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अस a into b plus a into c. Okay, so this law is applied to in this equation. Okay, and add all the things and you can get your answer. Okay, now write a Pythagorean triplet whose smallest number is 6. Okay, अगर smallest number 6 है तो if we get 2m is equal to 6, Pythagorean triplets क्या होते हैं? 2m, m square plus 1 and m square minus 1. Okay, now 2m is equal to 6. If we find 2m is equal to 6, so what is the value of m? M is equal to 6 upon 2, that is 3. Okay, now you can find m square plus 1 and m square minus 1 also. Okay, so that is your Pythagorean triplet. Now see, using prime factorization, finding the cube root of 5832. Again you have to do in prime factorization and pair 3 digits. Okay, and then you can find cube root of any number. Okay, evaluate the square root of 22.09 by long division method. Okay, this is our long division method. We already learned in when we complete the chapter. Okay, understand quadrilateral. We learn about quadrilateral. What is quadrilateral? Four sides closed figure is called quadrilateral. Okay, you know, 4-side closed figure is called quadrilateral. And we learn some type of quadrilateral, that is parallelogram, rectangle, rhombus, square, trapezium, kite, and so on. Okay, and we learn the properties of these quadrilaterals. Okay, some quadrilaterals are called parallelogram, such as rectangle, rhombus, square, and parallelogram. Why it is called parallelogram? Because they have exactly 2 pairs of opposite sides are parallel. Okay, so exactly 2 pairs of opposite sides are parallel, so it is called parallelogram. Trapezium and kite are called quadrilateral. Okay, understand. So in end I show you family of quadrilateral. Okay, in a family of quadrilateral, one type of
one is parallelogram and another is trapezium. Trapezium is a special type of quadrilateral because it having only one and one pair is one pair of opposite sides are parallel. Only one pair of opposite sides are parallel. It's called trapezium. And another pair, if another pair is equal, then it is called isosceles trapezium. Okay, understand? Now in a practical geometry हम पढ़ेंगे कि हम ये क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं. हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल. इन 7th स्टैंडर्ड यू लर्न how to construct triangle. Okay, because we learn in 7th standard all the properties of triangle, then we learn how to construct the triangle. Now since now this in this class we learn how to construct quadrilateral. Okay, constructing a quadrilateral, if you want to construct any quadrilateral, then you have to given, we shall learn what is given, then you have easily construct quadrilateral. Then constructing a quadrilateral, to construct a unique quadrilateral, at least 5 elements are required. Quadrilateral are constructed by splitting up the figure into 2 triangles. Okay, and quadrilateral has 10 parts in all. 4 sides, 4 angle, 2 diagonals. How many parts are there? Total 10 parts. See, 4 sides, 4 angles and 2 diagonal. Okay, to construct a quadrilateral we need at least 5 parts which are specific out of 10. ओके मतलब अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो एटलीस्ट हमें 5 पार्ट्स पता होना चाहिए. वी हैव टू नो 5 पार्ट्स, देन एंड देन वी easily construct the quadrilateral. Okay, so when we construct the quadrilateral, see here, construction of quadrilateral when 4 side and 1 diagonal are given. See here, 5 हो गए, 4 sides and 1 diagonal. When 2 diagonal and 3 sides are given, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angle are given, or when other special properties are known. What is other special properties? We know that in a quadrilateral diagonals are perpendicular. In some quadrilateral diagonals are perpendicular bisector. In some type of quadrilateral, diagonal are bisector of each other. Okay, and in some quadrilateral opposite angles are equal. In some quadrilateral adjacent angle are equal. In some quadrilateral, in a kite, we know that in a kite diagonal intersect at 90 degree. Okay, so this is our special properties. Okay, understand? Let's see. So student, let's see how to construct a quadrilateral when the length of 4 sides and a diagonal are given. Okay, then how to construct a quadrilateral? See here, if 4 sides are given, construct a quadrilateral. Example number 1, construct a quadrilateral PQRS where PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 6 cm, RS 5 and PS 5.5 cm and PR is 7 cm. Okay, so first of all, whenever it's given construction of quadrilateral, in a construction of quadrilateral, first of all you have to draw rough sketch, and if you draw rough sketch, it is very easy to construct. Okay, so you can get idea how to construct this quadrilateral. Okay, understand? So if you want to draw if you want to construct any quadrilateral, first of all you have to draw a rough sketch. Okay, understand? Now so you can get idea how to draw a quadrilateral. Okay, a rough sketch will help us
to visualizing the quadrilateral, we draw these first and mark the measurement. Okay. Now you can easily see here one diagonal means PR is given, all the four sides are given. Okay. Now first of all you can see here two triangles is गिवन. ओके, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं. डायगोनल जब कट कर रहा है तो टू ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं. ओके, सो हम इसे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो डायगोनल 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएं और उसके बाद में ऊपर वाला ट्रायंगल बना लें और नीचे वाला ट्रायंगल बना लें तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू डू in this situation? First of all, what can you do? So let's see. From the rough sketch, it is easy to see that triangle PQR can be constructed using SSS. Means हमें तीनों sides given है. Okay, construction condition means if 3 sides are given, we can construct a triangle PQR. Okay, so first of all, draw a line of 7 centimeter. We can draw a line, this line with the help of scale. You can draw a line 7 centimeter. Okay, now it is easy to see what is given. The length of PQ is 4 centimeter. So with the help of with P as a center and radius 4 centimeter, draw an arc. Okay, now with R is a center and taking 6 centimeter radius and draw and cut this arc. This is your point Q. Okay, so it's become PQR. Okay, now we have located the fourth point S. अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए P, Q and R. Okay, we know that PQR, PQ is 4 centimeter, QR is 6 centimeter, and PR, that is our diagonal, is 7 centimeter. Okay, now taking P as a center. Okay, and what is the difference between P and S? That is 5.5 centimeter, and R and S, that is 5 centimeter. Okay, taking P as a center and draw an arc as a 5.5 centimeter. Okay, and another arc R as a center and draw an arc, that is PR. Okay, and PS and RS, and this is your point S. Okay, join PR and PS and RS, and this is your required quadrilateral. Okay, understand. So whenever it is given 4 sides and 1 diagonal are given, then you have to draw first rough sketch and see. If the diagonal are given, then it is very easy to draw any quadrilateral, because diagonal cuts this that quadrilateral into 2 triangles. Okay, so in 7th standard you already studied how to draw a triangle. Okay, and with the help of that you have to complete when 4 sides and 1 diagonal are given quadrilateral. Okay, understand. Now what is our second case? In our second case, when 2 diagonals and 3 sides are given, if both diagonals is given and only 3 sides is given, then what can you do? First of all, you have to draw a rough sketch. Okay, understand, because rough sketch is help you how to construct a quadrilateral. Okay, understand. Now here see this rough sketch. AC and BD is a diagonal of 5.5 centimeter and 7 centimeter. AD is given 5.5 centimeter, DC is given 5 centimeter, and BC is given 4.5 centimeter. Understand? So you can first you can draw rough sketch, so it is easy to draw. Okay, now see here, you can easily see here ABC.
if you see this triangle ABC, then in this triangle see AC is given and BC is given. Okay, so and here if you talk about this triangle, in this triangle all the sides are given. Okay, this 5.5, 5.5 and 5. Okay, so first we can draw because 3 sides are given, so हम पहले क्या draw कर लेंगे, ADC. Okay, so first draw ADC. AC is 5.5 centimeter and taking A as a center and radius 5.5 centimeter, draw an arc. Okay, and C as a center, taking 5 centimeter radius and cut that arc. This is your point D. This is your point D. Okay, so this is your triangle ADC. Okay, this is your triangle ADC. Now let's again see ADC is completed. Okay, this portion will be completed. Now we have to complete that portion. Okay, so in that portion it is given BC is 4.5 centimeter. So you can draw D as a center and taking radius 4.5 centimeter and draw an arc opposite to D. Okay, because D जो है वो D से कैसा है, अपोजिट है. ओके, सो C एज अ सेंटर 4.5 सेंटीमीटर का आपको रेडियस लेना है और ड्रॉ करना है. ओके, नाउ C D टू B, D से B का भी आपको दिया हुआ है, डेट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, सो टेकिंग D एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, कट दैट आर्क, मतलब जो आपको आर्क आपने 4.5 सेंटीमीटर का खींचा है C से, उस आर्क को आपको कट करना है और उस आर्क को कट करके आपका कौन सा पॉइंट आएगा, डेट इज योर पॉइंट B. ओके, सो इट्स योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, अंडरस्टैंड? सो you can easily draw this type of quadrilateral. When two adjacent sides and 3 angles are known, if 2 adjacent sides and 3 angles are given, then what can you do? How to construct a quadrilateral? See, construct a quadrilateral MIST where MI is given, IS is given, angle M, angle I, angle S. आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं और हमें कंस्ट्रक्ट करना है और 2 एडजेसेंट साइड दी हुई है. ओके, सो फर्स्ट यू ड्रॉ अ रफ स्केच MIST. ओके, ऑलवेज नेम द quadrilateral in clockwise or anti-clockwise direction. Okay, if you write that in the clockwise and anti-clockwise direction, so it is easy to see. Okay, MIST. So MI is given and IS is given. Okay, and 3 angles are given. And you student, in a quadrilateral, here a rough sketch. Okay, how do you locate the point? What choice do you make? See here, अगर आप 3.5 सेंटीमीटर लेना चाहते हैं 3.5 सेंटीमीटर ले लो पहले. MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. या आप IS लेना चाहते हो तो IS लेकर के भी आप कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. नाउ 105 डिग्री का एंगल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप किस टाइप से एंगल ड्रॉ करेंगे. अगर आपके पास में कोई 90 डिग्री का एंगल अगर आपको ड्रॉ करना है या 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, फर्स्ट तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क. ओके, नाउ वो रेडियस को आपको चेंज नहीं करना है. दिस इज योर 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. ओके, नाउ हियर 30 एंड सॉरी हियर योर, जस्ट मिनट, it's your 60, 120 and 90. Here your 90 degree, it's your 30 degree. Okay, 90 and 120 के बीच में आपका आएगा 105 degree. Okay, so first what do you do? Draw an arc with the center is I. Okay, so draw arc and draw 90 degree angle. First you can easily draw 90 degree. Okay, and when you draw 90 degree angle, then
90 एंड 180 के बीच में आपका क्या आएगा, 105 डिग्री. दिस इज़ योर 105 डिग्री. ओके, सो ड्रॉ अ लाइन. अब आपने बड़ी बड़ी सी लाइन खींच देनी है. अब आई को सेंटर लेकर के आपको 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है एंड कट दैट लाइन. अगर आपने ये लाइन को कट किया तो देखिए आपको हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा. दिस इज़ योर 6.5, दैट इज़ एस. ओके, 1 पॉइंट मिल गया. अब एस को आपको इसको कैसे कर लेना है, थोड़ा सा टर्न कर लेना है पेज को टर्न करके आपको क्या करना है. अब एस पर आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है. 120 डिग्री. अगेन जहाँ पर भी आपको 120 डिग्री एंगल बनाना है आप क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे. 60 सेकेंड वाला आपका होगा 120. डोंट चेंज द रेडियस. ओके, अंडरस्टैंड. कंपास की रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है. ओके, दिस इज़ योर 120 डिग्री, दिस इज़ योर 60 डिग्री. ओके, सो दिस टाइप यू हैव टू ड्रॉ 120 डिग्री. ये 60 एंड 120. सो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री. ओके, ड्रॉ अ लाइन. नाउ व्हाट कैन यू डू. नाउ यू हैव टू मेक 75 डिग्री एंगल. कहाँ बनाना है आपको, एम पर, क्योंकि एंगल एम इज गिवन, दैट इज 75 डिग्री. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ 60 एंड 90 एंड 90 के बाद में 90 और 60 के बीच में आएगा आपका 75 डिग्री. ओके, एंड आपको ये लाइन को आगे तक बढ़ा देना है और ये यहाँ पर जहाँ मिलेगी वो आपका टी पॉइंट होगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो इट इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट. The information collection of information is called the information collected in the term of number is called data. Okay student, and the collection of information collected in the search case is called data. Data is usually collected in the context of situation that we want to study. Okay, for example, a teacher may like to know the average height of a student in her class. To find this, she will write a height of all the students in her class, organize the data in a systematic manner, and then interpret it accordingly. Okay, sometimes data is represented graphically to give a clear idea of what is represented. Do you remember the difference between different type of graph which we have learned in earlier classes, that is pictograph and bar graph and double bar graph. In 7th standard we learn about it. Okay, now we know that what is data. The information collected in the term of number is called data. Data are represented graphically to have a quick glance on them. Data available in an unorganized form are called raw data. मीन्स जो आप डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सोर्स से जो कलेक्ट करते हैं, that is called unorganized data or raw data. Okay, the number of times a particular observation occurs in a given data is called a frequency. Okay, उस पर्टिकुलर डेटा में जो भी नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, डेट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा. ओके, सो व्हाट इज़ रो डेटा. Raw data available to us is in the unorganized form called raw data. The raw meaningful interference, we need to organize the data systematically. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The result were as, अगर हम उसे लिस्ट में टेबुलर फॉर्म में अगर बना लेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, पढ़ने में ईजी रहेगा. ओके, and what do you mean by frequency. The number of times a particular observation occur in a given data is called its frequency. Okay, understand. When the data are large, they can be arranged in a group and each group is known as class interval or class.
सो व्हाट इज क्लास इंटरवल? और क्लास हम किसे बोलेंगे? व्हेन द डेटा आर लार्ज देन दे आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप एंड ईच ग्रुप इज नोन एज क्लास इंटरवल। ओके, सपोज अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो हम इजीली टेबल बना सकते हैं, बट वहीं अगर स्टूडेंट्स 1000 हैं सो वी हैव टू अरेंज इन अ ग्रुप, मीन्स 0 to 10 ईयर वाले कितने हैं, 10 to 20 ईयर वाले कितने हैं, 20 to 30। सो 1000 स्टूडेंट को हम अरेंज इजीली कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ द अपर वैल्यू ऑफ class interval is called its upper class limit and the lower value of class interval is called lower class limit. Okay, a table showing the frequency of various observation or class interval of a given data is called a frequency distribution table. Okay, understand? Now the difference between the upper class limit and lower class limit of a class is called the width or size of the class. Okay, now the difference between the lowest and the highest observation in a given data is called its range. Okay, lowest हायर ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। ओके, नाउ ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम। जो ग्रुप डेटा हमने बनाया है डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार डायग्राम where the class interval are shown on the horizontal axis and the height of the bar show the frequency of the class intervals. But there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval. सो जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमारे उन दो बारों के बीच में कोई भी डिफरेंस, कोई भी इंटरवल नहीं होता है। सो देयरफॉर जो हम डेटा यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए वो कंटिन्यूस डेटा होता है। ओके, सपोज वी कैन राइट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, that is called continuous data. Or we can if we can write 0 to 9, then 10 to 19, 20 to 29 and 30 to 39 and so on. That is called uncontinuous data. Okay, understand? Data can also be represented using a pie chart, circle graph. It shows the relationship between a whole and its part. Okay, there are certain experiments whose outcomes have an equal chance of occurring. Such outcomes are said to be equally likely. Okay, probability of an event. What is the probability of an event? Number of outcome that make an event upon total number of outcome of the experiment. Okay, when the outcomes are equally likely. Now let's see which type of question is come to your exam. So see, there are 4 options given out of which one is correct. Okay, means MCQ types जो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं जिस टाइप से। ओके, द रेंज ऑफ डेटा 9, 8, 4, 3, 2, 1। आपको ये डेटा दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to arrange it in ascending or descending order. Okay, so let's arrange it is ascending order. सबसे छोटा वाला नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? There is 1 also. Okay, 1, 2, now 3 also. Then आप पहले से अरेंज कर लेंगे 1, 2, कितनी टाइम है 2? 1 टाइम ही दिख रहा है। 3 पर हमें 2 टाइम्स दिख रहा है। ओके, नाउ 4, 1, 2, 3, 3 टाइम 4 है। सो यू कैन अरेंज इट। ओके, and see what is the greatest number here. 15 is the greatest number and smallest number will be 1.
So 15 minus 1 is 14. Okay, so what is the range of data? Highest observation minus lowest observation, so we can get 14. Okay, understand. Now the following data, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, is grouped in the class 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, etc. Find the frequency of the class 20 to 25. to 25. Okay, so student, the is group in the classes 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15, etc. Find the frequency of the class 20 to 25. So what is the frequency of 20 to 25? सो 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को देखना पड़ेगा कि इस ग्रुप में 20 to 25 में कितने नंबर्स आ रहे हैं. ओके, सो एंड राइट इट इन टेबुलर फॉर्म. ओके, and then find the answer. Okay, understand? So this way you can easily find the answers. Okay, now see the pie chart depict the information of viewer watching different type of channel on TV. Which type of program are viewed the most? So आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप पाई चार्ट को देखकर ही बता सकते हैं. डेट इज़ एंटरटेनमेंट इज़ 50%. सो 50% इज़ योर राइट आंसर. ओके, मीन्स एंटरटेनमेंट इज़ योर राइट आंसर. ओके, now see the question number 4. So observe this histogram and then given above the number of girls having height 145 centimeter and above is. So let's see how many girls having height 145 centimeter and above. So 145 कहाँ पर दिख रहा है आपको? C. वन 145 यहाँ से आपको दिखना शुरू हुआ है. 145 एंड अबो. सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 145, दैट इज 5. देन 5 + 4 9, 9 + 1 10. तो टोटल हाउ मेनी गर्ल्स? देयर इज 10 गर्ल्स जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर एंड अबो है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी अ डाइस इज थ्रोन 2 times and sum of the number appearing on the dice are noted. The number of possible outcome is 6, 11, 18 or 36. So what is the number of outcome possible? A dice is thrown 2 times and sum of the number appearing on the dice are noted. The number of possible outcome is. So एक ही डाइस है, अगर हम उसे कितनी बार 2 times थ्रो कर रहे हैं. ओके, पॉसिबल सम आर 2, 3, 4, 5, 6 बिकॉज 1 + 1 होता है. अ डाइस इज थ्रोन 2 times एंड सम. सो अगर दोनों बार 1, 1 आया तो 2 हो सकता है, 1, 2 आया तो 3 हो सकता है, 3, 2, 2 आया तो क्या आ सकता है? दोनों बार 4, देन 3, 2, 5. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं वो आपको दिए हुए हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 को छोड़ करके 2 से लेकर 12 तक कितने नंबर हो रहे हैं? 11. सो योर आंसर इज 11. ओके, अंडरस्टैंड. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड ऑन. मल्टीपल ऑफ 2, अगर एक डाइस हम फेंकते हैं तो मल्टीपल ऑफ 2 डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 2, 4 एंड 6, जो मल्टीपल हैं 2 के. सो टोटल नंबर इज 3. सो 3/6. 3 टोटल फेसेस कितने होते हैं डाइस पर? 6. नंबर ऑफ फेसेस इज 6 एंड व्हाट इज आउटकम्स? 3. 3/6 that is 1/2. So C answer is the correct one. Okay, understand. So see these questions also, filling the blanks to make statement true. आपको ये फिल करने हैं blanks. See here example number 7, example number 8,
9 and 8 and 9. Okay, now 10, 11, 12. See the question carefully. 10, 11, 12, 13. सी किस टाइप से आप उससे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, इस टाइप से आप उसे बना सकते हैं टेबल को, और टेबल को बना करके फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ हाउ टू रीड द पाई चार्ट. क्वेश्चन नंबर 14. So see this pie chart, and the pie chart give the marks scored in an examination by a student in different subject. If the total marks obtained were 540, answer the following question. In which subject did the student score 105 marks, and how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? So total marks is 540. Okay, and we know that circle is 360 डिग्री. ऑलवेज सर्कल कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का. ओके, सो फर्स्ट मार्क सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा फर्स्ट मार्क का? 360 अपॉन 540. ओके, सो 360 अपॉन 540 इंटू 105, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड 105 मार्क्स. सो आवर 70 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड. हैंस द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी. ओके, 70 डिग्री दिख रहा है आपको हिंदी में. नाउ हैंस द स्टूडेंट 105 स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी, बिकॉज टोटल हमें कितने मार्क्स के लिए फाइंड करना था? 105. और वी नो दैट सर्कल इज हैविंग 360 डिग्री एंड टोटल मार्क्स वी नो 540. सो 360 अपॉन 540 इंटू 105. ओके, अंडरस्टैंड. दिस वे you will find the marks. Central angle is 360 for 540 marks. So for 1 mark, सेंट्रल एंगल 1 मार्क के लिए क्या होगा? सेंट्रल एंगल 360 अपॉन 540. सो फॉर 90 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज 540 अपॉन 360 डेट इंटू 90, डेट इज़ 135 मार्क्स. बिकॉज हमें किसका देखना था? मैथमेटिक्स का देखना था. मैथमेटिक्स का हमारा था 135 एंड हिंदी के कितने थे? 105. सो वी हैव टू माइनस कर देंगे. माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आया? 30. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो. Draw a pie chart for a given data. Favorite food, number of people, North Indian 30, South Indian 40, Chinese is 25, others is 25. Okay, so total number of people is equal to 120. Okay, so we find the central angle for each sector. Okay, now North Indian is 30. So what is the central angle? 30 upon 120, that is 1 by फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/4. एंड सेंट्रल एंगल निकलेगा 1/4 इंटू 360, डेट इज़ 90 डिग्री. ओके, सेम साउथ इंडियंस का भी निकालेंगे, चाइनीज़ का निकालेंगे एंड अदर्स. ओके, सो चाइनीज़ और अदर का सेम आएगा बिकॉज परसेंटेज इज सेम. ओके, अंडरस्टैंड. द पाई चार्ट इज़ ड्रॉन. हमें इस टाइप से एडजेसेंटली हमें क्या कर लेना है? पाई चार्ट ड्रॉ कर लेना है. ओके, बिकॉज वी नो द एंगल्स 90, 120, 75 एंड 75. जब आप इन सब एंगल्स को प्लस करेंगे तो क्या वो हमें 360 दे रहा है? यस. ओके, और हमें इसे क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. Draw a histogram for the frequency of for the frequency distribution table given in the example number 13 and answer the following question. Example number 13 में हमें क्या दिया हुआ था? frequency distribution